हेलो दोस्तों, अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो राजस्थान पुलिस आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लाया है। Rajasthan Police is one of the most reputed police force in India and working for Rajasthan Police will be of utmost respect. You can also work for Rajasthan Police as a constable by giving Rajasthan Police recruitment exam. Your opportunity both मेल एंड फीमेल और हर साल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए 8,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। Hey, I'm Siddhartha Sareen and this is Youth for Work. If you want to know the eligibility, exam pattern and tips to crack the Rajasthan Police recruitment exam, then you must watch the playlist till the end. मैं हूं सिद्धार्थ सरीन और अब हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। पहले हम बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में। राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कोटा कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट के लिए अपर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के डिपेंड होती है। अब हम बात करेंगे कि कैंडिडेट्स की एग्जाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड द 10th और 12th फ्रॉम अ recognized board. Now let me tell you about the physical requirements for Rajasthan Police. For general category, male candidates की हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट की विड्थ मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स की हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप इस एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एप्लीकेशन फी 400 रुपए होती है। Now let's talk about the selection process for Rajasthan Police. इस प्रोसेस में टोटल 4 राउंड हैं। पहला राउंड है रिटन एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड में एग्जाम OMR शीट पर होगा। रिटन एग्जाम टोटल 75 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 90 मिनट होंगे। इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। यह एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। Part A, reasoning and logical ability. Part B, general knowledge, general science, current affairs. और Part C, history, geography, economy, culture, arts of Rajasthan state. इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा राउंड है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। These both are conducted simultaneously and are qualifying in nature. Third round is proficiency test and special qualification test. In this round, you have to demonstrate any special quality which you possess. The fourth round is preparation of selection list, merit list, medical exam, verification certificates and documents. Hi, I'm Siddhartha Sareen and we at Youth for Work will now cover important tips and tricks related to Rajasthan Police exam.
Try to cover all important topics asked in Rajasthan Police exam. Cover all important topics listed in Rajasthan Police Constable syllabus. Practice with Rajasthan Police Constable mock test to map your preparation with the desired results. When you practice mock test, you get familiar with the pattern asked and get familiar with the topics asked. A study plan will groom you well to crack the Rajasthan Police exam. Make a systematic study plan and strictly adhere to it. Practice with Rajasthan Police Constable previous year question papers to get an idea of what was asked over the years. There are chances of questions getting repeated over a few years. Stay confident about your preparation. If you have confidence, you will be able to tackle the exam blues in a positive manner. Maintain proper physical health and fitness for physical and medical exams.